देखेंगे डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स दो टाइप का होता है नेचुरली। एक होता है रिड्यूसिंग और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, अब रिड्यूसिंग वाला डाइसैकेराइड करेंगे तो उसमें CHO और COON फ्री रहता है, और दूसरे वाला में नॉन रिड्यूसिंग में वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो ये फ्री नहीं रहता है। तो वो जो होता है ना, टॉलेंस टेस्ट, वेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट, हाँ उस सब में ये पॉजिटिव देता है और ये नेगेटिव देता है, क्योंकि इसका CHO और कीटोन ग्रुप फ्री है और इसका है बॉन्डेड। ठीक है, अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में एक आइडिया हो गया। तो देखते हैं, रिड्यूसिंग में दो टाइप का लिंकेजेस होता है। एक हो जाता है C1C4 लिंकेज और दूसरा वाला हो जाता है C1C6 लिंकेज। ठीक है, ओके ओके। तो C1C4 लिंकेज और C1C6 लिंकेज। तो अब C1C4 में क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। C1C4 में हम लोगों का है लैक्टोज, मेल्टोज और सेलोबायोज। ठीक है, और इसके अंदर C6 में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेलीबायोज, जेंटीबायोज और ट्राईहेलोज। नहीं बेटा, ट्राईहेलोज तो हम लोग का इसमें होता है नॉन रिड्यूसिंग में। इसमें और एक एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, वो है आइसोमेल्टोज। ठीक है, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक चार्ट बनाने जा रही हूँ। वी आर गोइंग टू चेक दैट चार्ट। ओके, बहुत इजी हो जाएगा इससे। पहला हो गया C1C4 के अंदर क्या क्या है। फर्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज का बॉन्डिंग देखेंगे तो बॉन्डिंग हो जाता है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टो पाइरानोसाइल, नेम लिखो इसका तो समझ में आ जाएगा। 1,4 बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, फिर उसके बाद है मोल्टोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइल, 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब ये देखो, उसके बाद मैं समझा रही हूँ, पहले लिखो इसको। ठीक है, उसके बाद है सेलोबायोस। इसका क्या है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइल। देखो बीटा डी, मेरा सब वीडियो देखे होंगे तो ये आपको ये ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि क्या करना है इसमें। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइल 1,4 बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। उसके बाद है, इसमें और एक एग्जांपल लिख लो, लैक्ट्यूलोज। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, लैक्ट्यूलोज। इसका बॉन्डिंग हो जाएगा अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइल 1,4 बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। लिखो अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइल
1,4 बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज फ्रुक्टोफ्यूरानोज। उसके बाद है मेलीबायोज, जेंटीबायोज, आइसोमेटोज। मेलीबायोज का है अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइल, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी गैलेक्टो। चलो मैं सब लिख लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये हो गया एक पूरा चार्ट ऑफ डाइसैकेराइड, हम लोग जो जो करेंगे, ठीक है। इसमें से हम सब नहीं करेंगे, एक दो दिखाएंगे, तुम्हारा खुद से हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोज होता है बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइल, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। मतलब लैक्टोज के लिए क्या करना है, एक गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बीटा गैलेक्टोज पाइरानोज रिंग में, और एक ग्लूकोज। तो उसके बाद हो जाएगा स्ट्रक्चर। चलो लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइल, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। यहाँ पे तो होता है, तो OH होता है, बीटा H OH OH H OH H CH2OH H। तो हो गया बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज। अब इसके साथ यहाँ पे OH H OH OH H OH CH2OH H। लैक्टोज किस में पड़ता है, लैक्टोज इज C1, C4 रिड्यूसिंग, C1 C4 एंड। तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, OH की जगह बॉन्डिंग हो जाएगा। This is the lactose structure. Similarly, if I talk about maltose, then it is alpha D glucopyranosyl, alpha D glucopyranose. Means you will draw a alpha glucose, another alpha glucose, then you will join them through 1,4. This is maltose. So remember like that lactose is beta D galactopyranosyl and beta D glucose, and this is maltose. So alpha D glucopyranosyl, alpha D glucose. Okay, cellobiose is this one same as maltose, cellobiose, but only beta D. So beta D glucopyranosyl and beta D glucopyranose. Similarly, lactulose is C1C6. Lactulose is also galactopyranosyl fructofuranose. Okay, I will draw the sucrose structure similar like that. Okay, and C1C6 melibiose gentibiose, alpha D galactopyranosyl 1,6 glucopyranose, gentibiose is beta D glucopyranosyl, beta D glucopyranose. Okay, same as cellobiose. Gentibiose and cellobiose are same. You can see. So mark as cellobiose and gentibiose same. Okay. Lactose beta D. So lactose is beta D galactopyranosyl and beta D glucopyranose, and lactose is beta D galactopyranosyl and beta D glucopyranose. So lactose and beta is not same.
Then if I talk about maltose, alpha D glucopyranose and alpha D glucopyranose. This is same as isomaltose, but only C1C6 and this is C1C4. So you can also draw a connection between maltose and isomaltose. Lactose is beta D galactopyranosyl, yes, and beta D glucopyranosyl. Next we have mellibiose, alpha D galactopyranosyl, beta D glucopyranose. Sucrose is very important among these and lactose is very important among this whole structure. So I have drawn the lactose structure, I will draw the sucrose structure now. Now trehalose alpha D glucopyranosyl, alpha D glucopyranose. Same as isomaltose and maltose, but only 1,1 bonding. Okay, trehalose. Sucrose is alpha D glucopyranosyl, 1,2 beta D fructofuranose. 1,2 beta D fructofuranose. So this sucrose structure we will draw now. Its name is alpha D glucopyranosyl 1,2 beta D fructofuranose. Yes. Now draw. First, this structure, if you want, you can break from Fisher. I am starting from very low. Okay, fructose structure. Fructose structure is CH2OH, C double bond O, HOH, HOH, HOH. This one is OHH, yes. And CH2OH, isn't it? Okay, chalo. Now just remember that in this one you bond C2 with C2 with C5. So this will get OH and H and this one will just go. So furanose structure, you are just practicing how to go to pyranose, that also. Furanose structure is like this, you all know, isn't it? Yes. Just draw the furanose, fructofuranose structure, beta D. So OH will be up, CH2OH will be down. This is having one OH, one CH2OH in the hand, right? Then OHH, HOH, and this one will be CH2OH and H, isn't it? Now for the sucrose structure, you need to rotate this as 180 degree. So now rotate it 180 degree. So when you rotate 180 degree, this side will come, everything, this side. Also this thing will be inverted. CH2 will go on top, OH will come on down like this. Okay. 1, 2, 3, 4. This way it will go. Okay. So in the one is this. So CH2OH, OH. 2 is this, HOH. It will get. Understanding? That will also get inverted as it is 180 degree. 3 OHH it will get. OHH. 4 HCH2OH. Is it clear? Crystal clear? Okay. Glucopyranosyl alpha D. Easy. Easy. This is O.
alpha D glucopyranosyl H OH H OH OH H H OH CH2OH H, and there will be 1 comma 2 linkage, right? So if this one is 1 in fructose, this is 2, so this carbon, and 1 comma 2 linkage if I say, so both the OH will act first, not this OH. So this will go, you will just draw two structures, one you will show full and then you will join. So this is your fructose structure. So we started with fructose, so this was your fructose ultimately. So we started with fructose, what you want, this we got fructose. So what is this disaccharide called? This disaccharide is your sucrose. We read the structure of sucrose, and sucrose is a both the ends, like it is of C1 and C2, isn't it? So in fructose, C2 end means ketone end and C1 aldehyde end, these two are occupied. So this is a non-reducing sugar. Understood?